वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं डिस्कस करेंगे, बट जो भी एक्सपीरियंस मैंने जिन कंपनीज़ के लिए आई गॉट कपल ऑफ ऑफर एंड रिजेक्टेड इन कपल ऑफ देम। सो थ्रू आउट माई फोर्थ ईयर जब मैं प्लेसमेंट्स में बैठा, प्री प्लेसमेंट टॉक्स में बैठा, तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया एज अ माई एक्सपीरियंस क्या था और मैं क्या टिप देना चाहूँगा अगर इफ़ यू आर इन द सेम सिनेरियो, इफ़ यू आर इन थर्ड ईयर और मे बी इन फोर्थ ईयर, then this video is for you. So make sure that you watch till complete एकदम end तक and you'll get the idea. If you're in third year and fourth year, this video is basically a gold mine for you. ठीक है. So first tip जो मैं आपको देना चाहूँगा is basically try to get on campus offer anyhow. ठीक है, क्योंकि ऑफ कैंपस मार्केट इज़ वेरी बैड. सो यू ट्राई टू गेट एन ऑन कैंपस ऑफर एनी हाउ, वेदर इट्स अ 4 LPA, 5 LPA, 6 LPA, 7 LPA, इट डजेंट मैटर, बट यू ट्राई टू टेक बोथ एक वन ऑन कैंपस ऑफर. मे बी इफ इट्स ऑफ अ मास रिक्रूटिंग कंपनी स्टिल इट्स फाइन, यू बट लेकिन एक तो ऑफर यू शुड हैव टू टेक ऑन कैंपस, बिकॉज ऑफ कैंपस में यू CV शॉर्ट लिस्टिंग का ही प्रोसेस इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो मेक श्योर दैट यू विल गेट वन ऑफर ऑन कैंपस. Now the second is try to take 2 offers. Now this is the second tip. Now what does this mean? एक on campus offer ले लिया, now try off campus. Don't sit ideally, because I have seen that even if you scroll LinkedIn you'll find out that people who get 3-digit rank in JEE and all that, उनके तक ऑफर रिजेक्ट कर दिए गए हैं and now they are in off campus market, so the situation is worst. So make sure that you have 2 offers in your hand, so one act as a safety net for you. Okay. Next is basically prepare core subject and aptitude very well. Now what does this mean? I was very well versed with DSA. मैंने even ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक किया था, जबकि बहुत सारी कंपनीज वो पूछती नहीं हैं. बट मेरा एप्टीट्यूड का पोर्शन वीक था, कोर सब्जेक्ट तो नहीं, एप्टीट्यूड वीक था. कोर सब्जेक्ट में यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, मेरा वो स्ट्रॉन्ग था. लेकिन एप्टीट्यूड का पोर्शन हम लोग जनरली इतना ध्यान नहीं देते, बिकॉज उसमें काफ़ी फार्मूलेज एंड ऑल दैट भी हैं. बट मेक श्योर दैट यू डू कोर सब्जेक्ट एंड एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छे से. तो यू कैन बाय टेक यू फॉरवर्ड का कोर्स, उसके अंदर DSA भी है, कोर सब्जेक्ट्स भी हैं, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स भी हैं और एप्टीट्यूड भी मेंशन है, विच इज़ इंपॉर्टेंट. सो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड और मे बी यू कैन सी द लिंक विच इज़ अटैच इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आप लोग उधर से वो टेक यू फॉरवर्ड का कोर्स ले सकते हैं. यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. सो दीज आर द 3 टिप्स आई जस्ट रिवाइज. पहले इज़ कि ट्राई टू गेट एन ऑन कैंपस ऑफर एनी हाउ. सेकेंड इज़ ट्राई टू टेक 2 ऑफर्स, एंड थर्ड इज़ प्रिपेयर कोर सब्जेक्ट एंड एप्टीट्यूड वेरी वेल. फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ TPO ग्रुप, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ग्रुप का तुम पार्ट बनने का ट्राई करो, बिकॉज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इंटरनली विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया. ठीक है, कौन सी कंपनी कब आने वाली है, सो यू प्रिपेयर in advance for that company. So try to be a part of training and placement group. ठीक है, you can think that you are in 4th year and आपका time waste हो जाएगा, but no, you are getting insights. ठीक है, तो anyhow अगर आपको कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि TPO ग्रुप के पार्ट बन जाओ, so do the voluntary work and be a part of the TPO group. You will get so many privileges. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेजेस, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कि आप TPO ग्रुप के पार्ट बनो. ठीक है, सो दीज आर द 4 थिंग. एंड फिफ्थ वन इज़ की ट्राई टू मेंटेन एन एग्रीगेट CGPA ऑफ एटलीस्ट 8. ठीक है, 7.5 नहीं, 7 नहीं, एटलीस्ट 8. ठीक है, बिकॉज मार्केट काफ़ी ख़राब है. सो यू ट्राई टू have an aggregate CGPA of 8. ठीक है, also some company sees that whether you score 80% in your 10th or 12th or not. तो ये 10वीं और 12वीं के 80% भी मैटर करते हैं, प्लस whether you have score 80% ये तो मैटर कर ही रहा है, प्लस 8 CGPA भी कंसिडर करते हैं. तो you can't do anything of your 10th and 12th, but make sure that aggregate CGPA 8 हो या 8 से ज़्यादा हो. 8 से कम भी चलेगा, बट फिर जो अच्छी कंपनीज़ रहती हैं इवन वो तक नहीं बैठने देती काफ़ी राउंड्स में. फॉर एग्ज़ाम्पल इन माई कॉलेज डार्विन वॉज पेइंग अराउंड 16 LPA. उसका इन हैंड वगैरह थोड़ा अलग था, बट उन्होंने क्या किया था, दे मेक श्योर दैट कि स्टूडेंट्स के 10th और 12th में 80% के अबव हों, प्लस दे हैव एन एग्रीगेट CGPA ऑफ 8+. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट कि 7.5 नहीं, 7 नहीं, 8 के प्लस ही हो. सो दीज आर द 5 टिप्स दैट यू शुड कंसीडर. First one is try to take on campus offer, second one is try to take 2 offer, third one is try to be the part of TPO group, fourth is
do your core subject and aptitude very well. And the fifth one is uh, maintain an aggregate CGP of 8 plus throughout your engineering. So these are the 5 tips. Baki, if you want to do DSA very well, you can go by Take You Forward ka course. It is gold bhai. So you can go and click जो link description में दिया है, you'll get the maximum discount. All the very best. You can subscribe my channel. We'll post next video next week. So all the very best. This is the course I was talking about, Take You Forward ka plus subscription. Okay, now why it is important and why not a free resource? The reason is this contain the DSA problems, the solutions, editorials in different language. First reason. Second is this give you premium problem company wise also. Next is they give core subject, computer network, database management system, operating systems, and all the modules have video lectures and notes attached. So that's the reason, because most of the companies for sure ask core subject question. So by this platform you can prepare the DSA round stuff also, and the questions that are asked in interviews, which is mostly related to computer network, DBMS, OS, that is also covered over here. So some companies started asking low level design, this is also covered over here. And oops is one of the topic which is mostly asked in every technical interview, so that is also covered over here. Next is, now if you targeting a mass recruiting company, for example Capgemini, Tech Mahindra or something like that, then the aptitude is one of the very important thing. So this contains quant, verbal and mock test also. So that's why this is just a complete one source resources. Okay, so for example, now if you want to buy this resource, what you can do is you can click on buy now, and once you click on buy now, you'll come to this particular link. So now when you put all your details and you click on save and continue, now you can put my coupon code which is this, and when you click on apply, so you'll get the maximum discount which is available. You can check the comment section, or you can basically uh, directly come to the link which is given in the comment section or the description, and you'll get the maximum discount, and then you can purchase this. So you can give a bet on this particular platform. This is pretty much all you need for your technical interviews.